Rahim. This is Pakiza Fatma from BS Zoology 3rd semester. The topic of today's presentation is transpiration and factors affecting its rate. The contents which will include in this presentation are: what is transpiration, what are the factors that affect the rate of transpiration. These factors include light, temperature, CO2 concentration, humidity and wind. We will discuss how these factors will affect the rate of transpiration one by one. First, we will discuss what is transpiration. Actually, plants needs water for their growth and metabolism, but their roots absorb much more water than their need. इसलिए प्लांट ज़्यादातर अपना पानी वाटर इन्वायरमेंट में दोबारा से रिलीज़ कर देते हैं. Mostly plants release 97 to 99.5% of their water again in environment. The process through which they release their water in environment is known as transpiration. Transpiration is the process of water movement through plants and its evaporation from aerial parts such as leaves, stems and flowers. ट्रांसपायरेशन न सिर्फ प्लांट्स को उनका वाटर लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है बट आल्सो इन कूलिंग इफेक्ट एंड आल्सो इन फोटोसिंथेसिस. Now we will see what are the factors that affect the rate of transpiration. The first one is light. How light affect the rate of transpiration? Mostly transpiration occur in plants through the leaves. These leaves have small tiny openings known as stomata. Opening of these stomata result in transpiration. The opening and closing of stomata is directly controlled by light. Stronger the light, higher will be the rate of transpiration. That's why we can say that light also affect the rate of transpiration. If greater will be the rate intensity of light, higher will be the rate of transpiration because stomata opening depends upon light. Now we will see the next factor, that is temperature. How do temperature affect the rate of transpiration? When sunlight is stronger, temperature is increased. The evaporation of water from mesophile surface also increase, thus increasing the rate of transpiration. Means के जैसे ही टेम्परेचर इन्वायरमेंट का हाई होता है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाता है. जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी इतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ करेगी. इसलिए जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है या फिर प्लांट्स का ग्रोइंग सीज़न आता है तो साथ ही ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ कर देता है. द नेक्स्ट वन इज़ CO2 concentration. How do CO2 concentration affect the rate of transpiration? As we know, stomata not only help in transpiration but also in gaseous exchange. जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में CO2 और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा की ओपनिंग ज़रूरी होती है. इसलिए अगर इन्वायरमेंट में CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा नो नीड मोर टू ओपन देमसेल्फ. इसलिए स्टोमेटा की ओपनिंग कम हो जाएगी. अगर स्टोमेटा की ओपनिंग कम हो जाएगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगा. इट मीन्स CO2 कंसनट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू rate of transpiration. An increase in atmosphere CO2 means that stomata or the pores or leaves that exchange gas between the leaf and the atmosphere do not need to open as much. This means that at the scale of leaf, less water is lost and there is low transpiration. This statement clearly shows the relationship between CO2 concentration and transpiration. Next factor is humidity. Humidity means water vapors that is present in environment of plants. How do humidity affect the rate of transpiration? जैसे ही इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है. बिकॉज वाटर के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि ड्राई है उसमें इवेपोरेट होना ज़्यादा आसान है बनिस्बत उसके जो कि सैचुरेटेड है. एज वी कैन सी इन दिस ग्राफ, जैसे ही इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो साथ ही ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज, rate of transpiration go to decrease. It shows the inverse relationship between humidity and rate of transpiration. Now we will move on next slide. The last factor that affect the rate of transpiration is wind. How do wind affect the rate of transpiration? As we can see in this paragraph, wind speed increase, rate of transpiration increase. It shows the direct relationship between विंड एंड ट्रांसपायरेशन. बिकॉज जैसे ही विंड इंक्रीज़ होती है तो ये
इन्वायरमेंट जो अगर सेचुरेटेड हो गया हो ट्रांसपायरेशन की वजह से, तो इसको ये ड्रायर बना देती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर योर